Assalamu alaikum. I am Muhammad Yasin Qari. You know me. Today we will be dealing with change of narration. English 10th grammar portion. Well, guys and girls, you have already learned in your lower classes how to change a direct sentence into an indirect one. You have gone through it in your 8th class and then in your 9th class. So what you have to do, you have to ponder by yourselves. You have to read the textbooks, you have to read the grammar books, and you will find it very easy because you have already learned it. Well, I will recall a few things regarding the change of narration. How to change a direct sentence into an indirect one. Well, without going into much details, I will try to be short and to the point. Maybe the topic is completed in 2 or 3 videos. So, let me take an example. Let me write a direct sentence. He said to me, comma, inverted commas begin, I am going. Full stop, inverted commas close. You know this is a direct sentence, and you know a direct sentence has 2 parts. One part is outside the commas, and another part is within the commas, within these inverted commas. Well, this is called a reporting verb, and this part, which is inside the inverted commas, it is called reported speech. So this is a direct sentence. When we change a direct sentence into an indirect one, we have to follow certain rules of grammar, English grammar. So maybe at times I speak in Kashmiri in order to make you understand fully. So when we change a direct sentence into an indirect one, the first thing we have to remember is about the change in the pronouns. Pronouns are to be changed. I and we. And other pronouns, these pronouns are called first person pronouns. First person. And certain other pronouns are derived from I and we. For example, my, mine, our, me, myself, ourselves. All these are called first person pronouns. If you have a first person pronoun within the commas, in the part of the sentence which is inside the commas, if you have a first person pronoun, you have I, you have we. You have to change this pronoun according to the subject of the reporting verb. Born kashir put. It is direct jumlas chasan zis ke to already pata ak his chu kam honever athuna reporting verb ak his inverted comma mas athuna reported speech. He said to me taymun me. Yekin sat taymun lafaz report karan timai lafaz ish kam hanas fixes ka. I am going. Use ye काम अंदर reported speech. आत्मा अगर first person pronoun आस, यानी I या we, इस साथ इस direct indirect बनाओ, ये pronoun first person pronoun एक change गए और अगर ये change गए ये gets changed according to the subject of reporting verb. ये भी हिसाब. मसले ये जो I as when ये जो subject ये reporting verb को कहती he, so I will be changed according to this he. Subject of the reporting verb. This is one thing. So you remember I and we, that is the first person pronoun. If it is inside these inverted commas, within these inverted commas, first person pronoun, it is changed according to the subject of a reporting verb.
And if there is second person pronoun, you know, you is second person pronoun, and other pronouns which are derived from you. For example, yours, yourself. These are called second person pronouns. Second person pronoun you, second person pronoun, that is you, it is changed, it will change. When we change a direct sentence into an indirect one, you will change, second person pronoun will change according to the object of reporting verb. According to the object of the reporting verb. Object of a reporting verb. And if there is third person pronoun, he, she, they, or other pronouns which are derived from these, he, she, they, for example, his, her, their, him, them, so on, these pronouns do not change. So take this sentence, take the example. He said to me, I am going. यहाँ अंदर कामास के अंदर I है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है. जब इस सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो ये I चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, ही के हिसाब से. तो I का बन जाएगा ही. तो ये एक बात. दूसरी बात है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पास्ट में है. The reporting verb is in past tense. Said, you know, say is the present tense. The main verb, original verb say, first form of the verb is say. So said is the second form of the verb. So he said to me. Said is the past form of the verb. So reporting verb is in past. When reporting verb is in past, and we change the direct sentence into an indirect one, the present tense of reported speech will change into past. Misalkan reporting verb as said. Misalkan reporting verb as said. In a reporting verb as past. Reported speech it gets changed. Present agar yas it gets changed past. Pan present pan is past. यहाँ ये present में I am going और ये present continuous है, इसका बन जाएगा past continuous जब हम इसको direct से indirect में तब्दील करेंगे. अगर प्रेजेंट परफेक्ट होता तो इसका पास्ट परफेक्ट बन जाता. अगर प्रेजेंट सिंपल होता तो इसका पास्ट सिंपल बन जाता. तो अब देखिए मैं इसको कैसे चेंज करता हूं. और एक और बात जो आपको पता ही है, सेड टू चेंज होता है नॉर्मली टोल्ड में, और यहाँ कामास के बदले जैसे हम आमतौर पर कहते हैं कि यहाँ दैट आ जाता है. तो ऐसे ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी. सेड टू चेंज होता है टोल्ड में, said to change होता है told में, और told के बाद तो नहीं आता. He told me that. हाँ, recall? I change हो जाएगा इधर के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, तो I का बन जाएगा he, that he. अब ये प्रेजेंट है, I am going, इसका पास्ट बनेगा क्योंकि यहाँ said था. समझ आना? तो I am going, तो इसका बन जाएगा he am going नहीं बल्कि he was going. He was going. I am going का past I का जब he बनेगा तो past यूं बनेगा कि he was going. Full stop. He was going. तो यहाँ आपने दो बेसिक चीजें देखी कि प्रोनाउन हम कैसे चेंज करते हैं. यहाँ कामास के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से तब्दील होता है. अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से तब्दील होता है. और जब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट में है वो प्रेजेंट चेंज होता है पास्ट में, और अपना प्रेजेंट अपने पास्ट में. उसका मतलब ये कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में. तो एक बात. दूसरी बात जो आप यहाँ इस वक्त याद रखिए इस वीडियो में कि हमने देखा कि यहाँ जब पास्ट है तो इसका प्रेजेंट पास्ट में तब चेंज होता है जब हम डायरेक्ट जुमला इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं. लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच कामास के अंदर का हिस्सा अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है तो उसका टेंस प्रेजेंट से पास्ट चेंज नहीं होता, वो ऐसे ही रहता है. और यूनिवर्सल ट्रुथ आप जानते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ वो बातें साइंस के लॉज या जो प्रोवर्ब्स हैं जो हकीकतों पर मबनी है, उन बातों को हम वो बातें, वो चीजें, वो कानून, वो उसूल जो आज भी हैं 1000 साल के बाद, 10,000 साल के बाद भी वो बात रहेगी.
और इससे पहले भी थी, हर जमाने में वो बात ऐसी ही रही है, तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। मसलन द अर्थ इज राउंड, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मसलन ग्रीड इज कर्स, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, दीज सेंटेंसेस और यूनिवर्सल ट्रूथ्स, इनका प्रेजेंट पास्ट में तब्दील नहीं होता। मैं एक एग्जांपल यहां लिखता हूं, द टीचर सेड, द टीचर सेड, comma, inverted commas begin, यहां मैं लिखता हूं नीचे, the teacher said, comma, inverted commas begin, the earth revolves around the sun, full stop, commas close। सेंटेंस पर आप गौर करिए, the teacher said, said है रिपोर्टिंग वर्ब में, said है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो the earth revolves around the sun, जो रिपोर्टेड स्पीच है जो कामास के अंदर है, revolves, तो ये प्रेजेंट में है, यानी the earth revolves around the sun, जमीन आफ्ताब के गिर्द, सूरज के गिर्द घूमती है। तो उसूली तौर पर चूंकि यहाँ said था, जो पहला वो हमने पढ़ा, said की वजह से revolves प्रेजेंट, ये revolved में चेंज होना चाहिए था, तो ये ऐसे इसका इनडायरेक्ट बन जाना चाहिए था, the teacher said that the earth revolved around the sun, प्रेजेंट पास्ट में चेंज होता, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका पास्ट इंडेफिनिट बनना था, लेकिन the earth revolves around the sun चूंकि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसका टेंस चेंज नहीं होगा, इसका इनडायरेक्ट ऐसे बनेगा, the teacher said, the teacher said that the earth revolves, ना कि revolved, revolves ही रहेगा, revolves, revolves around the sun, around the sun, full stop। यहां टेंस चेंज क्यों नहीं हुआ, प्रेजेंट पास्ट में तब्दील क्यों नहीं हुआ, अगर यहां रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था, लफ्ज सेड था, इसलिए नहीं हुआ बिकॉज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस within the inverted commas, that is the reported speech, it is a universal truth here, so its tense didn't change from present to past। So today you recalled three things about the change of narration. Number one, how to change the pronouns. I and we, first person pronouns, are changed according to the subject of the reporting verb. You, the second person pronouns, they are changed according to the object of the reporting verb when you change a direct sentence into an indirect one. And number three, when the reporting verb is in past, the word said is there, you change the tense of the reported speech from present to past. And if the reported speech is a universal truth, then its tense doesn't change. Thank you.